केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह दोतासरा जी कांग्रेस अध्यक्षा का और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का दोनों का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी को कि यहां पर आएं और सब लोगों का स्वागत करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश के जन जन की ओर से, प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पहले मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ की जो रैली, राष्ट्रीय रैली थी, उसकी मेजबानी का मौका दिया। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर आयोजन करने की अनुमति देकर के हमें अनुग्रहित किया है। मैं इनके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस आला कमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो मेवाड़ की धरती है, ये संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती है। इसके ऊपर उदयपुर में झीलों की नगरी में आप सब पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस का इतिहास भी त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान का रहा है, मैं समझता हूं। इसलिए ये और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि यहाँ के नव संकल्प शिविर से हम जो संकल्प कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे, मैं समझता हूं एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम वो संघर्ष, उन ताकतों के खिलाफ निडरता के साथ में, जिन ताकतों ने आज देश में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता का गला घोंट रखा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में, जिस बेबाकी के साथ में जो उनका संघर्ष है, हम सब कांग्रेस के लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। आदरणीय सोनिया गांधी जी की त्याग की जो प्रेरणा है हम सब के कांग्रेस के लोगों में, इससे बढ़िया कोई उदाहरण इस देश में नहीं मिल सकता जो सोनिया गांधी जी के त्याग का उदाहरण हमारे कांग्रेस के लोगों के लिए है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जो संघर्ष राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व से हमारे कांग्रेस के लोगों का सीना चौड़ा होता है। आज हमें संकल्प लेना है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता पे काबिज हो गई जो छद्म राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर जो कांग्रेस का डीएनए था, सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता, उसका गला घोंटने जा रही हैं। इस छद्म राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर
वो सामाजिक समरसता का जो ताना बाना कांग्रेस ने सैकड़ों सालों से बुन के रखा है, उस भाईचारे को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को खून खौल उठता है कि हां, ये हमारा नेता है, जिस बेबाकी के साथ में, जिस निडरता के साथ में कहता है। मैं समझता हूं ये जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो धर्म के आधार के ऊपर बांटने वाला तेजाब हमारे राष्ट्र की बुनियाद के अंदर जो डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इन फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सब के लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है, आप सबके नेतृत्व में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हम सब संकल्प लेते हैं कि यहां से जो नया संचार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर लें, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2024 में हम इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। हम नए नए लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और इनका अनुभव है जिसके कारण से हम सब ये संभव कर पाए हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं राजस्थानी में कहूँ, माने माफ कर जो अगर कोई कमी रह गई है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा, रघुवीर मीना जी कांग्रेस कार्य कमेटी के सदस्य हैं, प्रियंका गांधी जी का रघुवीर मीना जी स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक गहलोत जी को कि आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, यहाँ पधारे हुए तमाम CWC के माननीय सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, पूर्व प्रदेश के अध्यक्षगण, AIC के तमाम पदाधिकारीगण, CAB लीडर्स, प्रदेश अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के तमाम हमारे साथीगण, मेरे प्यारे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका अपनी ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
जो चेहरे नज़र आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे हैं। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के डीएनए की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है यूपीए गवर्नमेंट को, ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी। पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के जो फासिस्ट तत्व हैं, इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे।
और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहां पर आमंत्रित करूं, 3-4 छोटी छोटी हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स यहां पे करना है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 बजे और आप लोगों को जो कार्यक्रम भी बांटा गया है, 3 बजे यहां से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स जिस को अलॉट करे गए हैं, वही सब्जेक्ट्स की आप लोगों को उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाना है। और साथ साथ में मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए व्यवस्था करी गई है, तो मीटिंग से पहले कृपया मोबाइल फोन्स अपने आप लोग सब लोग बाहर रखें। मोबाइल फोन्स आप सबके सब लोग बाहर रखें। और रात का डिनर 8 बजे अरावली लॉन्च के अंदर होगा और आप लोग समय के ऊपर अपना कार्यक्रम खत्म करके अरावली लॉन्च में डिनर 8 बजे और एक बहुत अच्छा शानदार कल्चरल प्रोग्राम भी राजस्थान के तरफ से रखा गया है। और आखिरी बात यह है कि कोई भी डेलीगेट के अलावा यहां पर इस परिसर के अंदर कोई व्यक्ति ना रहे। स्टाफ भी या और जो दूसरे साथी यहां पर हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोगों के लिए और व्यवस्था इस कॉम्प्लेक्स के बाहर रखी गई है, वहां पर जाकर के आप सबके सब लोग वहां पर बैठ सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू रिपीट all the 5 points in English now. First of all, soon after this meeting is over, from 3 p.m. onwards, group discussions will start, and all of you are requested to go to your respective group meetings only. Everyone has been allocated a specific group. Please stick to your own group which you represent. Another important thing is, we request you to keep your mobile phones outside the meeting rooms. Lockers have been provided with lock and key facility, and you can keep your mobile phones inside the lockers and lock it. Dinner would be at 8 p.m. at Aravali Lawns, and before the dinner a small cultural program is being presented over there, so we request you to be present on time at 8 p.m. for the cultural program and the dinner. And the last request is, only delegates are requested to stay in this complex. Non-delegates, including the staff, is requested to kindly go out. There's enough arrangement in this hotel complex only, so you can sit there and relax. This entire place is only for the delegates. तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा को कि वो आए, हमें संबोधित करें और इस ऐतिहासिक नव संकल्प शिविर में हम लोगों को मार्गदर्शन दें। सबसे अनुरोध है जोरदार तालियां बजा करके members of the CWC, Ashok Gehlot ji, Govind Singh Dotasara ji, friends and colleagues who have come from different parts
of the country, I would like to add my welcome to you too. इसको थोड़ा पीछे करना. Our Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst our policy which have led to this situation. But when it comes to the people, mostly they do not understand economic policies and matters. So my question is that would you also be doing something to take this message of what is wrong with the economy to the people? Well, if the message has not reached the people, we plead guilty, but we also plead guilty on your behalf. We are collectively guilty. So allow me to plead guilty on your behalf also. So if you cooperate with us, we can take the message to the people. The people I meet in my village or town feel the pinch of inflation. It's not yet become a large protest, but it will become. If inflation continues to rise at this rate, it will become a large protest. Sanjeev. Sir, you've talked about, you've stressed on reset of the economic policies, keeping into consideration the latest global and global trends. So would you be preparing a roadmap for suggesting to the government on what action needs to be taken, or some kind of suggestions, for on the recalibration of the policies? Do you really believe that anything that we say will be accepted by the government? If you are an optimist. We will prepare a set of policies that will serve the people of India, our economic interests, as the Congress party sees it, and we will take it to the people. I don't believe that the government is willing to listen to anyone, much less the Congress party. So my question is to you that what's the view of the Economic Committee about the taking petrol, diesel under GST? Because it is really hurting the people of the common man of our country. And second is, what is the view of your committee about the states demanding the GST compensation, their dues? That's all burdening the financial condition of the states. I've answered the second question when I answered Mr. Prabhu's first question. I've already answered the second question. On the first question, there is a complete breakdown of trust between the central government and the state governments. And if you think that only the non-BJP state governments have expressed this breakdown of trust, you're wrong. Privately, we know that even BJP finance ministers who attend the GST Council have expressed their dismay and concern about this complete breakdown of trust. Given this complete breakdown of trust, there is no way, there's no chance at all of the present government making even any headway in trying to persuade states to bring petrol and diesel under GST. There's no chance of that happening under this government. Hello. All are seeking more support from central government, economical support, like GST, time-to-time reimbursements like that. So how do you see this? People are suffering from Tamil Nadu, kind of Kerala at all. So how do you see this? Time-to-time GST reimbursements, and they are seeking more support from central governments on the schemes which comes under the state governments. This is not Tamil Nadu and Kerala. 78,704 crores are pending from the central government to the state governments as on 31/3/22. Let me repeat that number. Rupees 78,704 crore is pending.
We are already in the middle of May, and this amount has not been paid. And the compensation period will come to an end on 30th of June 2022. I believe it's the unanimous demand of all the state governments that the compensation period must be extended and arrears of GST must be paid forthwith. Sir, because you're talking about the reset, within the economic committee, whether there's a possibility of a resolution saying that the next Congress's economic line will be taking a step back from the liberalization policies that it's initiated? You're completely wrong. I'm sorry to interrupt you. Yeah. We are not stepping back on liberalization. We are stepping forward post-liberalization. So please don't make a mistake in your report. We are not stepping back from liberalization. We are stepping forward post-liberalization, taking into account global and domestic developments. Yeah, and also, sir, how do you plan to politically counter BJP's policies? The BJP con Arvind Subramaniam, he was talking about providing tangibles like free houses or ration scheme where people are lifted out of extreme poverty rather than being concerned about rising inequalities. So how do you politically counter the BJP with an economic kind of a framework? Rising inequalities and extreme poverty are not contradictory. Extreme poverty is one of the effects of rising inequalities. Anyway, I don't want to elaborate on that. Remember, there was an India Shining campaign in 2003, 2004. We were able to take our message to the people and roundly, soundly defeat the India Shining campaign. What the Modi government is doing is another repeat of an India Shining campaign. And we are confident that when the Congress Working Committee deliberates after the Shivir and takes the appropriate decisions, we would be able to put forward an economic program that will appeal to the people and will defeat the hype and the hyperbole and the exaggeration of the Modi government. Sir, as you stated eloquently about the dire state of economy. Just keep the mic closer to you. Dire state of economy. Do you fear that Sri Lanka-like situation emerge in India also? Now, I don't wish it, nor do I fear it. We still have a democratic process, although attempts are made by the Modi government to suppress voices in parliament and outside. We still have a democratic process, and I don't wish a Sri Lanka kind of crisis here. I don't fear a Sri Lanka kind of crisis here. But the democratic opposition must be allowed to speak and protest. Sir, one more thing. Other day, sir, we'll take another question, sir. We'll come back to you. Sir, this is Somnath Roy from Shangbad Pratidin. Sir, एक तरफ तो ऐसा महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो एक के बाद एक स्टेट्स का जो रिजल्ट आ रहा है, क्या आपको क्या लगता है कि आपके तरफ से क्या जनता के तरफ कोई मैसेज नहीं जा पा रहा है या जनता समझ नहीं पा रहा है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? But this is a very general question. I've said that the people feel the pinch of inflation, of loss of jobs, of non-creation of jobs. People feel the pinch. You talk to families, the families feel the pinch. When I was in Goa and I did some house-to-house campaigning, every other house, and I'm not exaggerating, in every other house, the plea was, I have a son, I have a daughter, I have a nephew who's educated, does not have a job, can you help us find a job? So they feel the pinch in their daily lives. Therefore, I think we are right in our assessment of the mood of the people, and therefore we are pleading for measures to alleviate their burdens and misery.
Premanshu, Shil Manoj, and then Janendra and Vikrant. Sir, yesterday Congress President talked about this permanent state of polarization. So how will you ensure these economic issues get its focus in this situation? And secondly, sir, yesterday in your group, Rahul Gandhi participated. Can you share his views? No, Mr. Rahul Gandhi was present. He didn't participate in our discussions. Gourav ji, what do you say about economic issues? See, it's for the people to decide what is more important. In my view, the fact that over 50% of women are anemic, a large proportion of children are anemic, stunted and wasted, that should hit us rather than should somebody eat halal meat or jatka meat. Somebody is complaining about the decibel level of loudspeakers. These issues can be addressed in normal administrative course. But the fundamental issue is extreme poverty among 10% of the people, in my assessment, hunger, nutritional deficiency, poor learning outcomes, and poor health outcomes. I urge you to read the ASER report 2021 and the NFHS 5 report. It hits you. If you are a sensitive Indian citizen, it hits you. What kind of learning outcomes and what kind of health outcomes we have in the 75th year of independence. These are the material issues. And I'm going to spend every ounce of energy speaking on these issues. Janendra from ABP, after that Aditi Fadnis. चिदम्बरम साहब, मेरे दो सवाल हैं. पहला तो ये कि 8 साल पहले मई 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 60 रुपया $1, 60 रुपये से नीचे था. अभी 77 रुपये के करीब पहुंच गया है. हमने प्रधानमंत्री मोदी को देखा था यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए, आपकी सरकार पर निशाना साधते हुए. तो जो मौजूदा हाल है, ये किस तरह रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो आम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, इसको कैसे आप कन्वे करेंगे, ये सवाल है. किस तरह से लोगों की जेब ढीली हो रही है. दूसरी बात यह है कि चिंतन शिविर See, I remember candidate Modi said that if we are elected to power, we'll bring the rupee-dollar rate to 40 rupees. And the late Miss Sushma Swaraj also said that in several meetings. It was, of course, a completely wrong statement. I mean, it betrayed a complete lack of understanding of how the exchange rate moves. So while we understand that the exchange rate will move according to the market, what is happening now is because of your inability to take the necessary measures. It is inflation and the threat of higher interest rates which is causing an outflow of US dollars, apart from other reasons. The two main reasons are high inflation and the threat of higher interest rates. Now, these are matters which were under the control of the RBI and the government has failed. I charge the government with complete failure. So unless they understand the causes of the sharp decline in the rupee-dollar value, I don't expect them to take remedial measures either. But we will continue to speak, we will continue to write, pointing out their failures. सर एक अगर एक ही सवाल रहने दें, बहुत लोग हैं एक छोटा सा समझने के लिए, और लोग भी हैं, विक्रांत हैं, क्विकली जल्दी अदिति. सर एक ये पूछना था कि चिंतन शिविर को लेके कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल शिविर है और कोई मैनिफेस्टो यहाँ से नहीं निकलने वाला. ऐसे में जो इकोनॉमिक इश्यूज पे जो कमेटी बनी है आप लोगों की, इसके पास कितना स्कोप है
चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल शिविर है और कोई मैनिफेस्टो यहाँ से जारी नहीं होने वाला, तो आप लोग के पास कितना स्कोप है, आप क्या कल हम लोगों के सामने लाने वाले हैं, इस पे अगर आप थोड़ा अगर प्रकाश डाल सकें। ठीक है अभी We are not writing a manifesto today. This is a Nav Sankalp Shivir, which means a new resolution. We have to make new resolutions on our political positions, our economic positions, our social positions. We have to make new formulations. What shape these formulations will take, I can't say. But eventually, it will get reflected in the manifesto of 2024. Chidambaram, Vikrant after that. Yeah. You spoke about unemployment. The government, which is among the largest employers, particularly in the railways, has put a complete freeze on recruitment for the last 2 years. First citing COVID, and then other problems. There's been no recruitment in the armed forces, there's been hardly any recruitment in paramilitary forces, there's been no recruitment in the lower levels of the scientific establishment, scientific officers and so on. What is your view on that? Everything, all the other restrictions, COVID restrictions have been lifted. You are having elections, you are having religious gatherings, but recruitment continues to be a big problem, and it's creating a lot of discrepancies and anomalies in the armed forces on account of seniority. You remember that in the 2019 manifesto we said, one of the first things we will do is to fill all vacancies in the central government. That's what we promised in the 2019 manifesto. So did the BJP. But since 2019, now we are in 2022, the number of vacancies has actually increased. In railway and paramilitary, the number of vacancies has increased. Firstly, this is anti-youth. This is anti-poor. This is anti-scheduled caste, anti-scheduled tribe. This is even anti the economically weaker sections, for which there is some reservation somewhere. The point is, if you don't fill vacancies in the government, in the broader government, capital G, and all its organizations, where will the young men and women of India find jobs? Yes, the private sector will throw up some jobs, but the government, as the biggest employer in this country, simply has downed its shutters. It is not willing to appoint anyone. I think this is a terrible onslaught on the rights of young men and women, especially those who have completed a degree or two and are looking for jobs. I think this is anti-poor, anti-youth, anti-scheduled caste, anti-scheduled tribe. But then, in our view, this government is anti-people. Sir, I quickly wrap up. Last three questions, Vikrant, Vijayalakshmi and Rajita. सर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप 91 में मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव सरकार में, उस वक्त में जो एक्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जहां पर जो 1947 में वर्शिप की पोजीशन है वही कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में कहीं ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है, कहीं ताजमहल को लेकर के बात हो रही है, तो ये चीज़ें कैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगी जनता के बीच? वर्शिप एक्ट जो आया था 1991 में, वो एक तरफ है और ज्ञानवापी सर्वे भी हो रहा है बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में. Well, I don't understand your question. I've answered. There is no meaningful debate when you say it's either polarization or economic policy. I don't understand that. I think economic policies are the lifeline of a country. It touches everybody. Polarization is only for a political purpose. It's not either you debate this or debate that. No, sir, we will oppose polarization, but we will plead for sensible, sane economic policies. Sir, I am technically asking, Worship Act जब है, उसके बाद में क्या ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होना चाहिए? Oh, the Places of Worship Act.
The Places of Worship Act was passed after deep consideration in Mr. Narasimha Rao's government. The only exception in that act was to the Ram Janmabhoomi. We believe that all other places of worship should remain in the status they are and they were. We should not make an attempt to change the status of any place of worship. That will only lead to huge conflict, and it is to avoid such conflict that the Narasimha Rao government passed the Places of Worship Act. Vijayalakshmi? Last question. And another Sir, one. I just wanted to ask... She's already asked one. Yeah, two of them. Sir, ever since the Modi government has come to power, economy has been one major focus of opposition, especially of Congress party. You've been attacking and alleging that this government has failed on that front. But despite that, in terms of electoral politics, it hasn't brought anything in terms of electoral politics. You've only been losing elections. Is there something wrong with your communication policy that you've not been able to communicate it to your electorate, the failure of the government? And if it is so, is Congress party mulling or discussing all that in the Shivir, in your committee that has been formed, how to communicate effectively to your electorate or to people? You're right. If we have failed to communicate to the people the distress, the distressful situation in which the country's economy is, yes, we admit that. We should sharpen our communication skills. We also request your cooperation and support in conveying the messages. Ranjita. हाँ सर यहाँ पार्टी हाँ go ahead. आवाज आ रही है? आ रही है. आप पार्टी और देश के अलग अलग चीज़ों पर चिंता करने के लिए आए हुए हैं. सवाल ये कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरी पंडित की वहाँ हत्या हो गई और उसके बाद उनकी कम्युनिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहाँ धरना दे रही है. किस तरह से आप इसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित boy was killed and the community is protesting against the We condemn the killing of the Kashmiri Pandit. We think that killing is not an answer to any problem. There are genuine issues in Kashmir. They must be addressed having regard to the history of Kashmir, the history of the accession of the state of Jammu and Kashmir to India, and the developments in the last 75 years. These problems can be addressed only by a dialogue between the government and the people of Jammu and Kashmir. But this government is not indulging in any dialogue. But that doesn't justify any killing. The Congress party is opposed to any killing by militants or indiscriminate killing by the security forces or religious hatred prompted killings. Any kind of killing we condemn in the most unequivocal terms. And we are sorry for the family of the person who died. We convey our deepest condolences, but we condemn in unequivocal terms any kind of killing. They still want to ask more questions, but it's already 10:30. They still want to ask more questions. No. We have to resume. We have a meeting schedule at 10:30. Some other time we'll look into. Thank you.